Hello students, this is Parul Kalia and I will take your accountancy, and today we will discuss your second chapter, Basic Accounting Terms. Basic Accounting Terms. In this chapter, I will explain you some basic terms, and the most important thing is what is the means of accountancy. Accountancy is an art of identifying, recording, classifying, summarizing and interpretations business transactions of financial natures and communicating it to end users of accounting information. In this definition, what the means of identify, you have to identify the transactions, that particular transactions, if they're relating to your business transaction, it will be recorded in your books of account. Here is given two transactions. The first is good purchase 50,000 and rent paid 10,000. Good purchase 50,000 is relating to your business enterprises, that it will be recorded, and rent paid, this is a personal expenses of owner, will not recorded in your books of account. And the next is recording. After identify the transactions, the same transactions will be recorded in your books of account, and this books is known as journal. Classification is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. Okay, it means, for example, 1st April your sale is 2000, 2nd April your sale 1000, 9 April your sale is 3000 and 15 April your sale is 5000. It means जब आप सेल अकाउंट बनाओगे तो you can easily get the total amount is 10,000. That the means of classification कि आप एक नेचर के अकाउंट का एक अकाउंट बना लोगे एक ही प्लेस पे. That the means of classification. And the next is summarization. Summarizing is the art of the presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and your users, internal and external. It means summarize का क्या मतलब होता है, जब आपने अपने सारे अकाउंट्स बना लिए क्लासिफिकेशन में, उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट्स मीन्स ईयर एंडिंग में आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, लाइक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इसको आप क्या बोलोगे, समराइज. मतलब आप इन्हें सिस्टमेटिकली मैनर्स में प्रेजेंट करोगे. व्हेन यू प्रिपेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, you can easily get your profit and loss, and balance sheet, it show your financial position. And the next is interpretation. It means in accounting the result of the business are presented in such a manners, like you have to prepare your trading account, profit and loss account, and last but not least your balance sheet. It means that the interested parties in the business, such as proprietor, managers, bank, they can have full information about the profitability and the financial position of the business. मीन्स इंटरप्रिटेशंस में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो यू कैन ईजिली गेट कि हाउ मच योर प्रॉफिट, आपका सेल कितना है, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेटिंग. इट मीन्स आप क्या कम्युनिकेट करोगे अपने यूज़र्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल को. ये जो आपने फाइनेंशियल पोजीशन शो करी है अकाउंट्स के थ्रू, वो आप मैसेज किसे डिस्क्लोज करोगे, to the internal and external user. That the main motto of accountancy. Again I repeat, accounting is an art of identify, recording में आप क्या बनाओगे, उनकी एंट्रीज करोगे जर्नल में. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, आप अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे. समराइजेशंस में यू हैव टू मेक योर फाइनल अकाउंट्स, and interpretations में you can easily get how much your total profit and loss, and after that result disclosed to the end users, internal and external. Okay, and the next term is accountancy. Accountancy means it is a body of knowledge prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions. It means accountancy tell you what is the rules and regulations. It means how to prepare your final accounts. Okay, जो आपने final accounts बनाए हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, अकाउंटेंसी टेल यू. एंड अकाउंटेंसी इज़ वाइडर फ्रॉम योर अकाउंटिंग. इट मीन्स अकाउंटेंसी का जो टर्म है वो मच मोर वाइडर है कंपेयर टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग.
And the next term is capital. In your business enterprises, amount invested by the owner or you can say proprietor in business, this is known as capital. जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए कैश, ठीक है। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ऑनर, उससे आप क्या बोलोगे, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर्स, दिस इज नोन एज कैपिटल। हेयर इज गिवन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैश 10,000, गुड्स की कॉस्ट कितनी है 4,000 एंड योर 6,000 इज मशीनरी, इट मीन्स द टोटल कॉस्ट विल बी 20,000, तो 20,000 विल बी योर कैपिटल। कैपिटल इज नोन एज, कैपिटल को आप क्या कह सकते हैं, ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ। And the next term is drawings. Drawing means any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds, this is known as drawing. जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉल कर रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, ड्राइंग्स। एंड द नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी. Liability means the amount which the firm owes to outsider. Outsider means your creditors. If you take a loan from the bank, ठीक है। Liability are two types, non-current liability and current liability. Non-current liabilities are those liability which fall due for payment in relative long time period, yeah, normally you can say more than 1 year, like long-term loans and debentures. And the next term is current liability. Current liabilities are those which are to be paid in near future, yeah, you can say within 1 year. So those liability is current liability, like bank overdraft, your creditor, your outstanding expenses, short term loans, these are the current liability जो जिसका पेमेंट आपको within 1 year पे करना है. And the next term is assets. Assets means assets are valuable resources owned by a business which are acquired at a miserable money cost according to R.N. Anthony. It means जो आपकी assets है, it's a valuable resources. This is helpful your business enterprises. Like for example, आप कोई भी जब business start करते हैं तो you need a assets like your building, your furniture, जो आपके long term क्या है, बेनिफिट करेंगे आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस में, एंड यू कैन इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी. एसेट्स आर टू टाइप, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू used in the business enterprises for the purpose of producing goods or services, and you can say not for resale purpose. That the means of non-current assets, like your plant and machinery, land and building, your computer, your vehicles. And the next is current assets. Current assets are those assets which are meant for sale. You can easily sell or you can convert into cash within 1 year, like your debtors, your stock. It means current assets वो assets है जिसको within 1 year आप cash में convert करवा सकते हो. Again, non-current assets are two types, fixed assets and non-current investment. Non-current investment it means that for example आपने अपने business के बाहर कई investment किया है तो this is known as non-current investment. And fixed assets are two type, tangible and intangible. Tangible means tangible assets are those assets which can be seen and touched. In other words, those assets which has a physical appearance like furniture, motor, computer, ठीक है, these are the tangible assets. And intangible assets are those assets which do not have a physical existence, like your goodwill, patents, trademark, any software, your prepaid expenses. These are the intangible assets which do not have a physical existence. It means आप उसे सिर्फ you can only feel, आप उसे touch नहीं कर सकते, like goodwill, कोई software है. And one more assets is fictitious assets या nominal assets. I will explain you later. Again I repeat, assets are two type, non-current assets and current assets. Non-current asset not for resale purpose because ये benefit करती है, आपके long term beneficial होती है.
आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज में. एंड करंट एसेट्स यू कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू ए कैश लाइक स्टॉक एंड डेटर्स. अगेन नॉन करंट एसेट्स आर टू टाइप, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. Fixed assets are two type, tangible and tangible. Tangible are those assets which you can be seen and touched like computer, furniture, and intangible those assets which do not have a physical existence like patent and goodwill. And the next important term is debtor. The term debtor represent those person or firm to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. It means जब आप किसी को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर इज ए सेलर एंड बी परचेजर. ए सोल्ड गुड्स टू बी. इट मीन्स ए ने बी को गुड्स सोल्ड की हैं. ठीक है, तो दिस इज़ योर क्रेडिट सेल. बिकॉज बी जो है उसका पेमेंट 3 months बाद करेगा, तो बी आपके लिए क्या हो जाएगा? डेटर. ओके, जब आप किसी को गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो वो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा? डेटर. एंड द नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म from whom goods have been purchased on credit and payment has not been made to them. It means जब आप किसी से परचेज कर रहे हो क्रेडिट में, फॉर एग्जाम्पल ए सेलर है, बी परचेजर. ए ने क्या किया है? बी से परचेज किया है गुड्स. ओके, ए ने परचेज किया है बी से, तो ए की लायबिलिटी है. ठीक है, ए की लायबिलिटी है किसको पेमेंट करना? बी को. तो बी क्या हो गया? बी क्रेडिटर हो गया. तो जब आप किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो पर्सन आपका क्रेडिटर्स होगा, और जब आप किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो पर्सन आपका क्या होगा? डेटर. एंड द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale purpose, which are used for producing the finished product, which are also meant to be sold. Okay, for example एक फर्नीचर डीलर अगर चेयर परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए क्या होगा? गुड्स. एक मोबाइल की शॉपकीपर, ठीक है, मोबाइल डीलर अगर मोबाइल परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स. एज इट इज़ स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी परचेज करेगा फॉर रीसेल पर्पज़ तो स्टेशनरी उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स. इट मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़ इट इज़ नोन एज गुड्स. हेयर इज गुड्स एंड एसेट्स. ठीक है, एसेट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स? एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पज़, ओके, एंड गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़. एंड द नेक्स्ट टर्म इज receipt. Amount received और receivable. It means amount या तो मिल चुका है या मिलेगा. ठीक है, किस लिए? अब receipt are two types, capital receipt and revenue receipt. जब आप गुड्स को, वो गुड्स जो आपने परचेज करी हैं फॉर रीसेल पर्पज़, ठीक है, व्हेन यू रिसीव ए कैश, उसके अगेंस्ट में यू रिसीव ए कैश, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो दिस इज़ नोन एज रेवेन्यू रिसीट. Another example of revenue receipt like commission received, interest received, dividend received. And capital receipt क्या होता है? जब आप अपनी assets को, ठीक है, जो not for resale purpose है, अगर आप किसी भी assets को when you sold any fixed assets and you receive a cash, तो this cash is known as capital receipt. ओके, बिकॉज आप जो अपनी फिक्स्ड एसेट ले रहे हो वो आपने रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं ली थी, ठीक है, बट आप उसे लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद अगर आप उसे सेल आउट कर रहे हो तो जो अमाउंट आपको रिसीव होगा तो दिस अमाउंट इज नोन एज कैपिटल रिसीट. एक्सपेंडिचर मीन्स any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services. This is known as expenditure. Expenditure are three types. The first is capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. It means expenditure means कोई भी कैश आपने स्पेंड किया है या कोई भी लायबिलिटी आपकी अराइज हुई है या आपने किसी एसेट्स को परचेज किया है या अपना गुड्स कोई प्रोड्यूस किया है या सर्विसेज किया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर
which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset. This is known as capital expenditure. It means आपने कोई परचेज करी है फिक्स एसेट्स या उसमें अमाउंट स्पेंड किया है उसकी इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी, मतलब ह्यूज अमाउंट जो अब आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट जो है वो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा. Okay, it means such expenditure benefit over a long period. And the next is revenue expenditure. Any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure. Like आपकी सैलरी, रेंट, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस इज़ नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट इन 1 ईयर. दिस इज नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड द नेक्स्ट टर्म इज इनकम. Income is different from revenue. And revenue means, what is the mean of revenue? When amount received from the sale of goods, this is known as revenue. और cost of goods sold is known as expenses. मतलब जब आप कोई भी goods produce कर रहे हैं जो उसकी cost है वो क्या होगी? Expenses. For example, the good costing 4 lakh are sold for 5 lakh. आपने मार्केट में कितने का सोल्ड आउट किया? 5 lakh. इट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कितना हो गया? 1 lakh. तो 1 lakh इज़ योर इनकम. ओके, मीन्स 4 lakh आपके क्या होंगे? एक्सपेंसेस. ओके, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे. एंड रेवेन्यू क्या होगा? 5 lakh. और इन दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो रिमेनिंग आपका जो अमाउंट है दिस इज़ नोन एज प्रॉफिट, या यू कैन से इनकम. 1 lakh इज़ योर इनकम. And the next term is prepaid expenses. Prepaid expenses are those expenses which are not relating to your current year but relating to your next year, but you paid in current year. So these expenses are known as prepaid expenses. जो expenses आपके current year से related नहीं है but आपने उनका payment current year में ही कर दिया है because वो next year से related है. तो उन prepaid expenses को आप क्या बोलोगे? करंट एसेट्स. तो दिस इज़ नोन एज करंट एसेट्स. ऐसे एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करंट ईयर में आपने पे कर दिया है बट एक्चुअली दे आर रिलेट टू नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, जिस आपने नेक्स्ट 2 ईयर का जो प्रीमियम है वो आपने करंट ईयर में दे दिया, तो उससे आप बोलोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. The next term is outstanding expenses. Outstanding expenses, या you can say current liability, because वो expenses आपके अभी भी ड्यू हैं which are relating to your current year, but आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, still वो अभी ड्यू हैं, तो you can say outstanding expenses. The next is fictitious assets. Fictitious assets are those, they are neither tangible nor intangible. They are losses not yet written off. इट मीन्स ऐसी एसेट्स जो ना आपकी टेंजिबल है ना ही इनटेंजिबल, एक्चुअली दे आर द लॉसेस. ओके, आई गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मार्केट में आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसकी एड में आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है? 5 lakh. ओके, तो इस 5 lakh का जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट 5 years तक होगा. ठीक है, तो 1 ईयर में आपको कितना प्रॉफिट होगा? 5 lakh डिवाइडेड बाय 5, तो इट मीन्स 1 lakh. इट मीन्स रिमेनिंग 4 lakh जो आपके अभी राइट ऑफ नहीं हुए, दिस इज़ नोन एज फिटिशियस एसेट्स. इट मीन्स अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ. ओके, तो ये 4 lakh को आप कहाँ शो करोगे? इन योर बैलेंस शीट, एसेट साइड. एंड द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. Discount means rebate. Rebate given by the seller to the buyer. Discount are 2 types. The first is trade discount and the second is cash discount. Trade discount will not be considered in your books of account. Okay, when discount is allowed by a seller to its customer, this is known as ट्रेड डिस्काउंट. एक फिक्स परसेंटेज जब आपको मिलता है डिस्काउंट का तो उसे आप बोलोगे ट्रेड डिस्काउंट. जब आप कोई बल्क में क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टोटल परचेज आपने किया है 1 lakh
और 5% आपको डिस्काउंट मिला है, तो these 5,000 will not be considered in your books of account. Only 95,000 you consider. This is trade discount. And cash discount, when discount is allowed to the customer for making prompt payment, it is known as cash discount. For example, आपका डेटर्स है, उसने कितना अमाउंट देना है आपको 20,000, बट आपने उसको मोटिवेट करने के लिए 10% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया. इट मीन्स 2,000 आपने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया एंड यू रिसीव ओनली 18,000, बट दीज 2,000 विल बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. मीन्स ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होगी, सिर्फ कैश डिस्काउंट की होगी जब आप बल्क में कोई क्वांटिटी परचेज करते हो. ठीक है, इट मीन्स जब आप सेलर, एज ए सेलर, जब आप अपने आप कस्टमर को एक फिक्स परसेंटेज पे दे रहे हो, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट. और जब आप अपने डेटर्स को, ठीक है, उनका पेमेंट आपको जल्दी मिले, उस पर्पज़ के लिए आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो, तो दिस इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट. And the next transaction is entry. Entry means when a transactions or event is recorded in your books of account, it is known as entry. For example, rent paid 10,000, electricity bill paid, journal expenses. ठीक है, this is your entry, and these entry will be recorded in your books of account. And the next term is gain. Gain means it is monetary benefit, profit. Yeah, you can say those transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, or a lottery ticket. This is known as gain. For example, building costing 10 lakh is sold 12 lakh. It means 2,000. The difference will be a gain on sale of building. Gain means जो आपके प्रॉफिट में कंटिन्यूशन में नहीं है, incidental. This is known as gain. For example, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड आउट किया, या आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया, या आपका लॉटरी का कोई टिकट निकल आया, तो दिस इज़ नॉन एज गेन. एंड द नेक्स्ट टर्म इज लॉस. द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग. First is, it convey the result of the business for a period when your total expenses is more than your total revenue. Here is your revenue is 2 lakh and your expenses is 2,40,000. It means your revenue are less than your expenses. Your expenses more than in your revenue. It means 40,000 is your loss. And the second is, sometimes some facts or activity against which firm receive no benefit, like loss due to fire, loss due to accident. This is known as loss. The term purchase is used only for the purchase of goods in which the business deal. This is known as purchase. For example, a cloth dealer purchase cloth. तो cloth उसके लिए क्या होगा, goods, because उसने रीसेल पर्पस के लिए उसे खरीदा है. और if cloth dealer purchase कर रहा है कोई फर्नीचर, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, assets. And the next term is purchase return. When purchase goods are returned to the supplier, these are known as purchase return, या you can say return outwards. जब आपने goods return कर दिए अपने supplier को, may be for any reasons, this is known as purchase return. और purchase return को आप क्या कह सकते हैं, return outwards. The next is sale. Sale means transfer of ownership of goods and services to customer for a price. Sale is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purpose. It means जिसको आपने purchase किया था resale purpose के लिए, ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे sale. And the next term is sale return. Some customer might return the goods sold to them. This is known as sales return, या you can say return inwards. It means when some customer goods को रिटर्न कर देते हैं, मे बी एनी रीजन्स, दिस इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न को आप क्या कह सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स.